Hello bachcho, so let's read what the question says. The question says match the items given in column 1 with those in column 2 and select the correct option from the codes given below. So function column 1 has functions given in it, which is ultrafiltration, concentration, transport of urine, storage of urine corpuscle, storage of urine. Part 2 has Henle's loop, ureter of urine, urinary bladder, Malpighian corpuscle, and fifth is PCT. So ultrafiltration कहाँ पर होता है? Ultrafiltration occurs in Bowman's capsule and in the glomerulus, and glomerulus plus Bowman's capsule को मिलाकर हम कहते हैं glomerulus plus Bowman's capsule. It is known as Malpighian corpuscle और renal corpuscle. Bowman's capsule इन दोनों को combiningly हम कहते हैं Malpighian corpuscle और renal corpuscle. और रीनल कॉर्पसल. सो हमारा ऑप्शन ए मैच कर रहा है विद फोर्थ. सो वी कैन एलिमिनेट सम ऑप्शंस ऑन दिस बेसिस व्हिच इज बी एंड सी. हम दोनों ने इसका एलिमिनेट कर दिया है. सेकंड इज कंसंट्रेशन. तो ये पूछ रहा है कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन. तो कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन होता है थ्रू काउंटर करंट मैकेनिज्म. काउंटर करंट मैकेनिज्म. एंड व्हाट इज काउंटर करंट मैकेनिज्म? Counter current mechanism occurs between Henle's loop, which is loop of Henle, and the arterioles which are there, which are peritubular capillaries. तो concentration of urine में कौन involved होगा? Peritubular capillaries and Henle's loop. So concentration में B आ जाएगा with Henle's loop first. And then transport of urine occurs through ureter. Transport of urine होता है with the help of ureter. That is C matches with option number 2. And storage occurs in urinary bladder. That is C matches with option number, sorry, D matches with option number 3. तो हमारा करेक्ट आंसर आ रहा है A, 4th, B1, C2 and D3. हमारा करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर D. So I hope you understood this question well. Thank you.